Okay, we're taking you right now to breaking news coming in from right here in Delhi. Let's take a look. Visuals coming in from Delhi itself, where the BJP is protesting against the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the national capital. Remember, over the last few days, ever since he was taken into custody without a conviction, BJP workers have been asking for his resignation. They're saying, how can he remain Chief Minister? Let's go to my colleague Anshul. He's with us live at the Aam Aadmi Party offices where the BJP is conducting this protest. Let's go to him to understand more. Anshul, this is a demand the BJP has been making every single day. Anshul, this is a demand the BJP has been making every single day in the days since the Chief Minister has been taken into custody. Tell us, with what the High Court said yesterday, these demands only getting louder? Well, definitely, especially after the verdict that came in from the Delhi High Court, the demands from the Bharatiya Janata Party has definitely gotten a lot more louder. They are making sure that they leave no stone unturned in propagating this message that Arvind Kejriwal should resign, because now the manner in which the High Court has come down heavily on the Aam Aadmi Party, that is something that has really impacted the manner in which the government is functioning out here in the national capital. I like to show you in the visuals over here. Hundreds of protesters have already gathered over here at ITU, just a few hundred meters away from the Aam Aadmi Party office. The plan of action over here is to start the march from here to the Aam Aadmi Party office, demanding the resignation of the Delhi Chief Minister. It remains to be seen how will things eventually pan out. The permission to carry out the protest at this very spot has been given, but the permission to march towards the Aam Aadmi Party office has not been given by the Delhi police. But yes, it remains to be seen how will the Bharatiya Janata Party actually try to manage this crowd that has gathered over here. I'll just try and speak to a few of our protesters who have gathered over here. You can see these placards that they have got. गली गली में शोर है, केजरीवाल शोर है. आप लोग आज यहाँ हैं प्रोटेस्ट करने, केजरीवाल जी का इस्तीफा मांग रहे हैं. कोर्ट ने ये कहा है कि उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिससे वो केजरीवाल जी को बोले कि इस्तीफा दें. क्या प्लान ऑफ एक्शन और कैसे प्रेशर बनाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी दिल्ली की जनता देख रहा है कि वो दिल्ली सरकार जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है, और आज हमारे कल हाईकोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया है, इसका उनका मुद्दे का. और अभी केजरीवाल को इस्तीफा तत्काल देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आपको बोलना चाहिए कि वो कुछ एक्शन ले इस पर, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो कह दिया वो जेल से ही सरकार चलाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता है. कोई व्यक्ति जेल जाए और इस्तीफा ना दे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है. केजरीवाल इस्तीफा नहीं, अपने ऐसा आराम को छोड़ना नहीं चाहते. कोर्ट ने ये कहा है कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे वो प्रेशर बना सके केजरीवाल जी पे इस्तीफा देने के लिए. सर, अब जिन्होंने संविधान बनाया उनको वैसा भी नहीं पता था कि कोई व्यक्ति ऐसा भी करेगा, मुजरिम बनेगा और वो इस्तीफा नहीं देगा. ऐसा संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था. ये तो बेशर्मी है, ये मतलब दादागिरी एक तरह से करना चाहते हैं केजरीवाल. आज की क्या रणनीति रहेगी, आज कैसे प्रोटेस्ट होगा? आज प्रोटेस्ट तो हम करते रहेंगे जब तक केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे. देखिए, so as you heard there that these workers are absolutely adamant that they want to go ahead and amp up more pressure on the Aam Aadmi Party so that the Delhi Chief Minister could resign. On the other hand, the Delhi Chief Minister has also made this very, very clear that he will not resign from his post and will try to run the government from inside the jail cells itself. It remains to be seen how will the Lieutenant Governor eventually take a decision, because he is the person at point over here who is authorized to take a decision if at all there is a constitutional breakdown out here in the national capital with the Chief Minister going inside the jail. But yes, the manner in which the Delhi High Court has come down heavily on the Aam Aadmi Party and has demolished the arguments that have been put forth not only by the Aam Aadmi Party but also by the lawyers of Arvind Kejriwal. Definitely it has been proven as a shot in the arm for the Bharatiya Janata Party, as it has given them more ammunition to go ahead and attack the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal for his involvement in the alleged liquor policy scam that happened out here in the national capital. Anshul, just stay with us. Let's go over to what Shazia Ilmi from the BJP had to say. क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है,
और ये भी साफ हो गया और हाई कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके पास इनफ मटेरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया है बाकायदा कि जो अप्रूवर्स हैं और जो अप्रूवर है उनको अगर जो बेल दी जाती है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है, यानी कि न्यायिक क्रिया होती है, उसका लेना देना किसी भी सियासत से नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा।